Hello everybody, welcome to iExamBee's LegalBee. This is Amrita, your law faculty at iExamBee. Welcome back to the mock test series that we have started exclusively on LegalBee every day 11 a.m. And I am dealing with the topic of constitutional law. अभी तक अगर आपने बाकी के वीडियोस चेक नहीं किए हैं, जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए. Topic wise MCQs, mock tests you are getting every day exclusively at 11 a.m. So don't forget to subscribe to our YouTube channel and check out all the questions. Practice these questions as these are from the very core topics and यानी कि subject wise के साथ साथ हम लोग आपको topic wise questions दे रहे हैं. So इससे ज़्यादा beneficial और क्या हो सकता है? If you get it every day, you can practice these questions. आप इन PPTs को भी download करके रख सकते हैं as it will help you a lot in practicing and revising these questions and at the same time revising these concepts later. आज के वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू. इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट and questions relating to state legislatures. So this is going to be very beneficial for all those who are pursuing exams जिसमें law subject है, जुडिशरी हो गया, UGC NET हो गया, उसके अलावा और भी एग्जाम्स जैसे कि UPSC जहाँ पर आपको पॉलिटी नाम का सब्जेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो उसके लिए भी ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सो डोंट मिस दिस टॉपिक. Before we start, I would let you know about this update that iExamBee has come up with free mock tests. So you can just check it out. And these are for UGC NET law examination. The free mock tests are available and you can immediately go and attempt it. इसके लिए आप डायरेक्टली www.iexambee.com पर जाकर मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं. दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UGC NET law exam or else if you are preparing for any state level entrance test that is for same pattern and same syllabus as per UGC NET examination. So this will be helping you for that as well. अगर आपकी कोई भी queries हैं, you can reach out to us at hello@iexambee.com or helpme@iexambee.com. या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल करके अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. So let us start with the first question from our today's topic. In a state legislature, council of ministers are to aid and advise the governor, governor and president, governor and Vidhan Sabha, governor and Vidhan Parishad. So in a state legislature, now this is a question from state legislature and the council of ministers, which is a very important topic again, they are going to aid and advise whom? So the question is actually very easy. Just options देखकर अब यहाँ पर एक option है जिसमें B, C, D सभी questions, सभी options है. So you do, if your concepts are clear, you can very easily answer it. Article 163 of the Indian Constitution talks about Council of Ministers aiding and advising the governor. They are just going to aid and advise the governor. Always remember that. To be a member of House of People, minimum age prescribed is 25 years, 18 years, 20 years, 28 years, 30 years. So what is the minimum age prescribed to be a member of the House of People? Again, the answer is very easy. Everybody has general knowledge of that. Qualification for membership of Parliament and member of Parliament and House of People is for membership of Parliament. अब यही question आपको state level पर भी आ सकता है. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली. मैं आपको कुछ क्वेश्चन स्टेट पर से दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पार्लियामेंट केस पे बेसिस दे रही हूँ. आप इस हिसाब से एनालॉजी लगाकर समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है. जो क्वेश्चंस आपको प्रेसिडेंट पर आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वैसे ही आप वही क्वेश्चंस को स्टेट लेवल पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, जैसे गवर्नर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं. Which of the following is not correct statement? President can send messages to the House of Parliament. President has a right to address the House of Parliament. President may send messages to any House of Parliament for bills pending in respective houses. President may not require attendance of members for his address. President has a right to send messages to the House of Parliament. अब इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा correct statement नहीं है. So which of the following is not a correct statement? That President can do what?
relating to the messages that are sent to the House of Parliament. So इसके लिए आपको President और House of Parliament का co-relation बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, and what is the role of President in relation to Houses of Parliament. So the correct option is D, because this is not a correct statement. President may not require attendance of members of the Parliament for his address. ऐसा नहीं हो सकता. This is common logic लगा कर भी हम इस क्वेश्चन को easily solve कर सकते हैं. एंड इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन से आपका रिविजन हो रहा है कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स है. सो राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 86. President may address either House of Parliament or both houses assembled together, and for that purpose require the attendance of the members. Who is the ex-officio chairman of the Council of States? President, Vice President, Prime Minister, Speaker, Governor of NCT, Delhi, that is National Capital Territory of Delhi. तो इसमें आपको ये देखना है कि ex officio chairman कौन है Council of States का. एंड ये बहुत ही easy question है मुझे ऐसा लगता है. And this is actually a very important question, I would say. And the correct answer is Chairman and Deputy Chairman of the Council of States is actually the Vice President. Because Vice President का भी अगर आप topic पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. He is acting as ex officio Chairman of the Council of States as well. Article 89 is important for that purpose, and answer is B. Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha are chosen by, again, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर. आप जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं आपको ये सारे ऑफिसेस का बेसिक पता होना चाहिए. ओके, रिमेंबर दैट यू हैव टू स्टडी नॉट इन वेरी मच डिटेल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू शुड नो व्हाट दीज ऑफिसेस आर, व्हाट आर देयर फंक्शंस, हाउ दे आर चोजन. ओके, मेंबर ऑफ लोक सभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर इज चोजन बाय लोक सभा, डेप्यूटी स्पीकर इज चोजन बाय द स्पीकर, मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा. Correct option is A, members of the Lok Sabha. They are going to choose speaker as well as deputy speaker. अब ये option देखकर कुछ लोग confuse हो सकते हैं कि लोक सभा speaker choose करेगा, deputy speaker को speaker choose करेगा, but ऐसा नहीं है. So this concept also should be clear. House of People shall not consist of more than members chosen by direct election from constituencies of states. 530, 552, 532, 533, 540. So how many members should be there in House of People? Those who are selected, those who are elected by direct election from the constituencies of states. So the answer is A, 530 members. 530 members, not more than 530 chosen by direct election from the territorial constituencies in the states. अब इसमें कुछ लोगों को confusion हो सकता है that 530 कैसे 545 क्यों नहीं. But you have to focus what they have asked. Direct election from the constituencies of states पूछा गया है. So this is something which you have to apply your presence of mind when you're reading the question. Who has the power to impose restrictions on trade, commerce and intercourse between one state and another in public interest? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट हमेशा आपको सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है. कभी कभार घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. पावर्स को लेकर घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टू चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. So who is having the power to impose restrictions on trade, commerce and intercourse between one state and another if it is in the public interest? Whether Parliament can do that, whether state legislatures are also going to do, they are also going to have some kind of involvement that they are going to do it in mutual agreement, whether Parliament and concerned states will do it together. So the answer is Parliament. In the public interest, Parliament is having this power to impose restrictions. So which is the correct answer? Article 302 talks about this power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse. How many members can be nominated to represent the Anglo-Indian community in the legislative assemblies in the state? Now focus, they are talking about state. Anglo-Indian community के लिए कितने members की ज़रूरत होती है? How many can be nominated? And the answer is 1. Representation of Anglo-Indian community in the legislative assemblies of the states. Article 333. In states having a legislative council, the total number of members shall not exceed. Now, this is a question which is very famous question. काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. मैंने आपको यहाँ पे स्टेट्स का पूछा है, पार्लियामेंट का भी पूछा जा सकता है, मीन्स यूनियन लेवल पर भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन.
कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना परसेंटेज होना चाहिए और कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए. एंड द आंसर इज 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव assembly of the state. Composition of legislative councils only covers this point, so article 171 you have to refer for that purpose. The last question for today's discussion, adult suffrage. What is the meaning of adult suffrage? I think many of you have done voting also, so you must be knowing the concept of adult suffrage. This is very important concept and our voting is something which has been derived from this. अब यहाँ पर एक और एक पैरेलल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या है. अडल्ट सफरेज कहाँ से लिया गया है, उसका सोर्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करते वक्त किस सोर्स से हमने अडल्ट सफरेज ये प्रोविजन उठाया है बेसिकली. दैट कैन यू लेट मी टू नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो प्लीज. And the answer to this question is E, that is both A and C. Any person who is a citizen of India and any person who is not less than 18 years of age. That means he is eligible for elections, he can do voting, elections to the House of People and legislative assemblies of states to be on the basis of adult suffrage. Article 326 talks about this. 18 ईयर्स होने के बाद आप मतदान कर सकते हैं, सिंपल थिंग है. तो ये अडल्ट सफरेज से आया है एंड येस सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए. बट ये जो अडल्ट सफरेज है ये आया कहाँ से है, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू पीपल, सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. So this was all that I had to discuss with you all today. Don't forget to subscribe to LegalBee and prepare for your exams 50% faster with iExamBee. Thank you everybody.